everyone and welcome back to my channel. Today we'll start with ecosystem and we'll revise this chapter within 20 to 30 minutes and I'll cover all the important topics and the most important questions from this chapter to be asked in NEET. And this chapter has around 3 to 4 questions every year. You can expect around 3 questions this year also, which are 12 marks, and it's very scoring chapter. As you know, ecology is the interaction of organisms with abiotic components and biotic components. So last chapter में हमने देखा था कि ecology begins at the organism level and organism level पे हम उसकी physiology की बात करते हैं. उसके बाद we move to a population and then a community. Population is the species living together and interbreeding, and community are the different species living together. तो लास्ट चैप्टर में हमने सिर्फ बायोटिक कंपोनेंट्स पे फोकस किया था. नाउ वी स्टडी अबाउट द कम्युनिटी इंटरैक्टिंग विद इट्स एबायोटिक कंपोनेंट्स. अब कम्युनिटी किन किन फैक्टर्स से इंटरैक्ट कर सकते हैं, लाइक व्हाट आर द एबायोटिक कंपोनेंट्स. नाउ एबायोटिक कंपोनेंट्स कैन बी द टेम्परेचर, विंड, एयर और soil and everything. So what is ecosystem? Ecosystem consists of a community interacting with its abiotic components. So community plus abiotic components is equal to ecosystem. An ecosystem can be the functional unit of nature where living organisms interact together and interact among themselves and with the abiotic components. Ecosystem varies in size and the composition. Ecosystem can be of two types, terrestrial and aquatic. Terrestrial ecosystem में आएंगे ponds, lakes, river, estuary. Estuary are the places जहाँ sea water and river water एक साथ मिलता है. And then we have the terrestrial ecosystem. Terrestrial ecosystems में we have tropical rainforest, deserts and grasslands. So now the ecosystem can be divided on the basis of their formation. They can be man-made or they can be natural. Natural ecosystems are self-sustainable and have high productivity, while man-made ecosystems are not self-sustainable and they have comparatively low productivity. Man-made ecosystems can be crop fields and aquariums. The system has two components, structural and functional. Structural components can be the stratification and species composition, and the functional components can be the productivity, decomposition, energy flow and nutrient cycling. So what is stratification? Stratification is the vertical distribution of all the different species occupying different trophic levels. हम अगर एक फॉरेस्ट की बात करें तो वी हैव द ग्रासेस एट द लोएस्ट स्ट्राटम. ग्रासेस के बाद वी मूव टू हर्ब्स, shrubs, small trees, then tall trees. So in this way, the different species are occupying different levels. Species composition is the identification and the enumeration of the plant and animal species in an ecosystem. All the collective enlistment of the species living in an ecosystem is called as species composition. Now moving to the functional components of ecosystem, we start with productivity. So what is productivity? अगर हम हमारे बायोस्फीयर की बात करें, the entire living system functions on energy. Energy कहाँ से आ रही है? Sunlight is the sole source for the energy for us, and productivity depends entirely on sunlight, on the light energy source. For an ecosystem to be functioning properly and to be self-sustainable, we need a constant solar energy input. And now we have a few terms like primary production and productivity. Primary production is the amount of biomass produced by photosynthesizing plants. कितना biomass, कितना organic matter photosynthesizing plants produce कर रहे हैं, divided by their area and the time period. So productivity is just the rate of the primary production, like the rate of the amount of biomass produced by the photosynthesizing plant. The unit of primary production is gram per meter square or the kilocalorie per meter square, and the unit productivity is gram per meter square per year or the kilocalorie per meter square per year. Gross productivity is in an ecosystem is the rate of the production of biomass, and the net primary productivity is the rate of production of biomass minus the respiratory losses. अगर हम productivity की बात कर रहे हैं तो सारी productivity सारा जो biomass produce हो रहा है photosynthesis से plant से, वो सारा यूजफुल नहीं होगा. लाइक वो सारा हमारे लिए अवेलेबल नहीं होगा. कुछ तो प्लांट्स के अपने रेस्पिरेटरी लॉसेस भी होंगे या अपने सेल्फ रेस्पिरेशन से जो productivity कम होगी. These are called the respiratory losses of plant. Gross primary productivity minus the respiratory losses gives us the net primary productivity, and then we have the secondary productivity. Secondary productivity is the amount of organic matter or the rate of formation of organic matter by the consumers. Consumers जो
हर्बीवोर्स हैं वो कितना ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस कर रहे हैं, किस रेट से प्रोड्यूस कर रहे हैं, दैट इज द सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी. एंड द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी वाज द रेस्पिरेटरी लॉसेस सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. Primary productivity depends on the plant species in an area, and now we have the net primary productivity of our whole biosphere. This is given as 170 billion tons of dry weight of organic matter. अब हम अगर इतने प्रोडक्टिविटी को देखें 170 बिलियन टन्स, तो वी हैव दिस अजम्पशन इन आवर माइंड कि अगर हमारे पास सीज एंड ओशंस और द एक्वेटिक लाइफ, वाटर हमारा इतना ज्यादा है, 70% ऑक्यूपाई कर रहा है सरफेस को, तो प्रोडक्टिविटी भी ओशंस की ज्यादा होनी चाहिए. बट दैट्स नॉट ट्रू. ओशंस की प्रोडक्टिविटी आर ओनली 55 बिलियन टन्स आउट ऑफ 170 बिलियन टन्स. सो रिमेंबर दिस डेटा बिकॉज ये डेटा पहले पूछा जा चुका है एंड दिस इज इंपॉर्टेंट. Then we have the decomposition. Decomposition is the breaking down of complex organic matter into the simple soluble forms. अब ये कैसे होता है? Detritus जो होता है, the organic matter, the complex organic matter is broken down or fragmented by the different decomposers we have in our nature. Dead plant remains such as leaves, bark, flowers, and dead remains of animals, including fecal matter, constitute the detritus. These bacterial and fungal enzymes degrade the detritus into the simpler inorganic substances. This process is known as catabolism. जो भी further उन्होंने break down किया था अपने enzyme से by the process of catabolism. उनके bacterial and fungal enzyme act on the detritus, उसको simple inorganic substance में convert कर देते हैं, and this is the process that is called catabolism. Then we have humification. Humification is the formation of humus. ह्यूमस इज अ डार्क कलर्ड अमॉर्फस सब्सटेंस जो कोलॉइडल होता है और जिसकी डिग्रेडेशन बहुत स्लो होती है. ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन अकर ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन इन द सॉइल. ह्यूमिफिकेशन leads to the formation of a dark colored amorphous substance called the humus that is highly resistant to the enzymes or the microbial action and undergoes decomposition at a very slow rate. ह्यूमस जो फॉर्म होता है, जो डार्क कलर्ड सब्सटेंस होता है, डार्क कलर सब्सटेंस जैसे हम सॉइल देखते हैं, सॉइल की जो अपर लेयर होती है वो हमें किस कलर की दिखती है? वो डार्क कलर की होती है. सो ह्यूमस इज अ डार्क कलर्ड अमॉर्फस सब्सटेंस. Amorphous substance that is very slow in degrading process and colloidal in nature. Some microbes can still degrade the humus and this process is known as the mineralization. अगर ह्यूमस डिग्रेड हो रही है तो उसके कुछ फैक्टर्स होंगे, जिन फैक्टर्स पे उसकी डिग्रेडेशन प्रोसेस डिपेंड करता होगा, उसका स्लो रेट या फास्ट रेट, किस रेट पे वो डिग्रेड होगी, किस रेट पे उस माइक्रोबियल एक्शन होगा. So the rate of degradation of humus depends on the chitin content, lignin content, nitrogen content, oxygen. As we know, decomposition is largely an oxygen requiring process. Decomposition के लिए ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट होती है. अगर ऑक्सीजन ज्यादा होगी तो decomposition भी बहुत फास्ट होगी. अगर ऑक्सीजन कम होगी तो decomposition भी कम होगी, कम रेट से होगी, स्लो होगी decomposition अगर ऑक्सीजन कंटेंट कम है. So the rate of the decomposition is controlled by chemical composition of detritus and climatic factors. In a particular climatic condition, decomposition rate is slower if the detritus is rich in lignin and chitin, and quicker if the detritus is rich in nitrogen. अगर detritus में nitrogen content ज्यादा होगा तो decomposition faster rate पे होगी as compared to the higher content of chitin और lignin. Chitin और lignin उसके decomposition को slow down करेंगे and the नाइट्रोजन कंटेंट और द ऑक्सीजन कंटेंट उसके डिकम्पोजिशन को फास्ट करेंगे. डिकम्पोजिशन रेट कैन ऑल्सो नाउ डिपेंड ऑन द टेम्परेचर एंड द मॉइस्चर कंटेंट. अगर जो गर्म लाइक वार्म एंड मॉइस्ट कंडीशंस में डिकम्पोजिशन बहुत फास्ट रेट पे होगा एज कम्पेयर टू द ड्राई कंडीशंस. नेक्स्ट वी हैव द एनर्जी फ्लो. हमारे पास जो टोटल सनलाइट अवेलेबल होती है जो हमारे अर्थ पे आती है उसका सिर्फ 50% ही प्लांट्स एक्टिवली अब्जॉर्ब करते हैं एंड उस 50% का फर्दर 2 to 10% ही पार होती है. पार इज द फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन. सो जो 50% अब्सॉर्ब कर रहे हैं प्लांट्स उसका भी 2 to 10% है पार. ओनली 50% ऑफ सनलाइट इज फोटोसिंथेटिकली एक्टिव एंड उसका भी 2 to 10% is only captured by plants and energy is required for all the living organism. Like हमें पता है कि energy flow कैसे होता है producer से consumer से and consumer से furthermore कैसे energy flow होती है. So in this we will study about the kind of or the amount of energy that flows throughout the trophic level and हर organism को अपने body process करने के लिए अपने बॉडी को प्रॉपरली फंक्शन करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है. सो हाउ डज दिस एनर्जी इज यूज्ड? अगर कांस्टेंट एनर्जी फ्लो नहीं होगा तो प्रॉपरली फंक्शन नहीं होंगी बॉडीज.
This is also the second law of thermodynamics which says कि अगर एक energy flow continuous है तो ही molecule synthesize हो रहे हैं या तभी reactions completely हो रहे हैं, because हमें energy चाहिए कोई भी reaction करने के लिए. With the energy flow, we move to the food chain. What is a food chain? Food chain is just the energy flow in the different trophic levels, flowing from the herbivores to the carnivores, and from producers to herbivores to carnivores and to top carnivores. So in this way, we define a proper flow of energy through the different trophic levels, which is also called the food chain. Now, food chain में we have certain levels, and food chain can be of two types: a grazing food chain और a detritus food chain. जब एक organism मरता है तो उसकी detritus food chain start हो जाती है, because अगर एक organism मरेगा तो the living tissues when they die it forms detritus, and जब जो leaves and जो bark और ये सब चीज़ें जब होती हैं, dead material होता है, that is called litter. So the dry things are called litter, and the living tissues when die, they are called detritus. So when an organism dies, the beginning of detritus food chain is initiated in that step, because decomposers वहाँ पर उसको detritus को decompose करेंगे using different mechanism we studied. A detritus food chain can be depicted as grass as the producer, then we have goat as the primary consumer, and then the man as secondary consumer. So in this way, energy is transferred from one trophic level to other in a grazing food chain. Now we have the detritus food chain. Detritus food chain begins with dead organic matter. It is made up of decomposers, which are heterotrophic organisms, mainly fungi and bacteria. They meet their energy and nutrient requirements by degrading dead organic matter or detritus. They are also known as saprotrophs. अगर हम डेड ऑर्गेनिक मैटर की बात करें तो दैट इज डेट्रिटस, और अगर हम ड्राई मैटर की बात करें जो डेड ड्राई इनऑर्गेनिक मैटर है, दैट इज कॉल्ड लिटर. Decomposers synthesize enzymes that break down dead and waste materials into simple inorganic materials which are subsequently absorbed by them. जो decomposers होते हैं वो simple organic substances को वो inorganic absorbable substance में convert करते हैं जो easily absorb हो जाएं and जो easily utilize हो सके. About the ecological pyramids. Ecological pyramids are the most important topic in this chapter, and एक question ज़रूर आ सकता है कि कौन सा pyramid किसका upright होता है, किसका inverted होता है, कौन सा spindle shaped होता है. So this is very important, and we can expect one question from this topic at max. And ecological pyramids can be of three types: pyramid of biomass, pyramid of number, and pyramid of energy. Either we talk about the aquatic ecosystem or the terrestrial ecosystem. Pyramid of energy is always upright, because as per the 10% law of Lindemann, we know that only 10% of energy is passed on to the next trophic level, and अगर हम एक trophic level से दूसरे trophic level पे जा रहे हैं तो energy इतनी कम होती जा रही है. So as we move forward, the pyramid of energy is always upright. सबसे नीचे सबसे ज़्यादा होंगे producer, उसके बाद वो कम होंगे, उसके बाद top पे सबसे कम होंगे consumers. So in this way, energy कम होती जाएगी producers to consumers में, because 10% law के according energy decrease हो रही है from one trophic level to the. In NCERT, we have this pyramid of number in the grassland ecosystem, and pyramid of biomass is inverted in the aquatic ecosystem, and it is upright in the terrestrial ecosystem, because aquatic ecosystem में एक बहुत कम अमाउंट ऑफ फाइटोप्लैंक्टन की पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा जू प्लैंक्टन्स की न्यूट्रिशन को सपोर्ट कर सकती है. Ecological succession is the gradual or the predictable change in the species composition of an area, and it starts with the pioneer community, then a sterile community, and then the climax community. जो pioneer community होती है वहाँ से population शुरू होती है, वहाँ से एक initiation होती है, and then we have the serial community, which is the some communities in the middle, like the population in the middle of the evolution. जब climax community नहीं आई है but the pioneer has evolved, that's the serial community. And इसमें we can have the primary succession or the secondary succession. Primary succession होगा एकदम barren rock पे या cool down volcano पे, बट सेकेंडरी सक्सेशन होगा किसी डिफॉरेस्टेड लैंड पे या फिर कोई जल गया है वहाँ पे. जो सेकेंडरी सक्सेशन है वो फास्ट होगा बट प्राइमरी वाला स्लो होगा. द एंटायर सीक्वेंस ऑफ कम्युनिटीज दैट सक्सेसफुली चेंज इन अ गिवन एरिया आर कॉल्ड सेर, एंड दिस सेर इज
all the communities or all the population that came from the pioneer to the climax community are the seer. Succession can be from Xerac condition to Mesac condition or the Hydrac condition to Mesac condition. अगर Xerac conditions में हो रहा है तो dry to Mesic conditions achieve करने की कोशिश करेगा plants में, and अगर Hydrac में हो रहा है, Hydrac succession में, वो बहुत ज़्यादा like submerged conditions से. Standing state is the amount of nutrients, specifically inorganic nutrients, present in the soil at any given point of time. And then we have the nutrient cycling. Nutrient cycling में two types of cycles are there: carbon cycle and phosphorus cycle. Phosphorus cycle is a mineral cycle and carbon cycle is a vapor cycle, we can say, because carbon हमारा atmosphere से recycle होता जा रहा है, बस phosphorus का जितना use हो रहा है उतना ज़्यादा वापस नहीं जा रहा है वो उसके. We come to the last topic of this chapter, which is ecosystem services. इकोसिस्टम सर्विसेज का डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज डेटा एग्जैक्ट पूछा जा चुका है कि कितना किसका प्राइस था, सो यू शुड लर्न दिस वन. Healthy ecosystems are the base for a wide range of economic, environmental and aesthetic goods and services. The products of ecosystem processes are called ecosystem services. जो भी हम ecosystem में हमें जो चीज़ें मिल रही हैं उससे, that are basically called ecosystem services. एंड इस पे एक प्राइस लगा था इकोसिस्टम सर्विस पे. एवरीथिंग हैड अ डिफाइंड प्राइस रेंज विच इज Robert Constanza and his colleagues have very recently tried to put price tags on nature's life support services. Researchers have put an average price tag of US $33 trillion a year on these fundamental ecosystem services, which are largely taken for granted because they are free. This is nearly twice the value of global gross national product, that is GNP, which is US $18 trillion. Out of the total cost of various ecosystem services, the soil formation accounts for about 50%. Contributions of other services like recreation and nutrient cycling are less than 10%. And the cost of climate regulation and habitat for wildlife are 6% each. तो हमने जो इसमें इसका रेट दिया था, द प्राइस रेंज $33 trillion, दे हैड 50% ऑफ सॉइल सर्विसेज, एंड देन वी हैव द रिक्रिएशन एंड न्यूट्रिएंट साइक्लिंग एज 10%. द कॉस्ट ऑफ क्लाइमेट रेगुलेशन एंड हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ फॉर 6% each. On this, we end this chapter, and I hope I made this chapter clear for you all. And if I helped you in this, please subscribe to my channel and like this video. You can comment down below if you had any doubts or you want me to put any more topics into more videos. So, thank you.